Today I discuss about the inductive approach for reasoning. Inductive reasoning start with the specific observation and data, identify a pattern, and then form a general rules. The conclusion is probable but not certain because the future features cases may not follow the pattern. The structure of the inductive approach reasoning are the specific observation या specific data को हम देखते हैं और या specific observation को हम पर गौर करते हैं या डेटा को देखते हैं, फिर उससे हम क्या करते हैं देच अप्रोच द पैटर्न और इससे हम एक पैटर्न डिराइव करते हैं और फिर इस पैटर्न से हम क्या बनाते हैं जनरल रूल और जनरल रूल से हम इसका रिजल्ट अखज़ करते हैं। सर्टेनिटी प्रॉबली यानी ये सर्टेनिटी इसका क्या है 100% नहीं है बल्कि प्रॉबल है, एक्सपेक्टेड है, लाइकली बट नॉट गारंटीड। लाइकली है प्रॉबली मीन्स लाइकली बट नॉट गारंटी बट नॉट 100% श्योर इसका रिजल्ट अगर देते हैं। फॉर एग्जांपल द ऑब्जर्वेशंस 2, 4, 6, 8 and 10 the pattern each number increased by 2. The general rule the sequence follow an is equal to 2 and the highly probably but not absolutely certain for all the terms. दूसरा एग्जांपल को देखें the nature phenomena the observations the sun has risen every morning in the recording history यानी अगर सूरज को देखें कि उसका तो डेली द पैटर्न डेली सन राइजिंग द जनरल रूल द सन विल बी राइज टुमारो द सन will be rise tomorrow the probable but not 100% certain theoretical possible that the something change और इसके एग्जांपल हैं और इसके एप्लीकेशन ये हैं द एप्लीकेशन ऑफ inductive approach reasoning scientific method forming hypothesis from experiment and predictive analytic weather stock market and machine learning learning the pattern from data and the third methods we will discuss abductive approaches for reasoning. Abductive reasoning start with an observation must be a surprising fact or effect and the works backward to find the best possible explanation or cause. The conclusion is the most likely explanation but not certain. The structure and direction, the observation, explanation, which must be fact or effect, which approach possible cases and best approach to the best explanation. For example, certainty likely based guess based on available evidence. इस पर हम क्या करते हैं वो कर लेते हैं डिसीजन conclusion. For example, observation the ground is wet. The possible cases the rain sprinkle या spoil the water. तो
The possible cases rain, sprinkle, spoiled water, etc. These are possible cases. The base explanation पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर डिसीजन कर सकते हैं कि ये रेन है या स्प्रिंकल है या स्पाइल्ड वाटर है. इट probably rain if no other signs contradict. The conclusion is likely but not certain. And example 2, the medical diagnosis, observation, fever and cough. The possible cases, flu, the common cold, COVID-19 and bacterial infections. These are three possible cases. किस चीज़ के हो सकते हैं, इससे ये भी बीमारी और खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है. तो बेस एक्सप्लेनेशन से हमें पता चलता है कि ये जो खांसी है या बुखार है ये फ्लू की वजह से है, कॉमन कोल्ड की वजह से है, या कोविड-19 की वजह से, या बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से है. मे बी फ्लू, हो सकता है ये फ्लू हो, बेस्ड ऑन द सिम्टम्स एंड रीजन. Conclusion is the best possible, but the tests are needed for certainty. The application of abductive approach reasoning, the medical diagnosis के लिए भी हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कि फाइंडिंग इफ मोस्ट लाइकली इलनेस फ्रॉम सिम्टम्स. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यही अप्रोच. Pairing the best explanation for evidence और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी में भी हम ये अप्रोच यूज़ कर सकते हैं. एक्सपर्ट सिस्टम फॉल्ट डिडक्शंस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के लिए भी हम ये मेथड या ये अप्रोच यूज़ कर सकते हैं. इस साइड में भी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं.